तमाम साथियों को या अली मदद and thank you for joining us this morning. We will continue on our Baitul Kal Farman. That is Farman number 47, Dubai, United Emirates, 23rd January 2018. Bismillahir Rahmanir Rahim. या मौलाए मेहरबान मदद फरमा हल्लुल कय्यूम अली अल्लाह हल्लुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा या मौलाए मेहरबान मदद फरमा या मौलाए मेहरबान मदद फरमा या मौलाए मेहरबान मदद फरमा या मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला तौफीक ताईद हिम्मत व यारी मौला या मौलाए मेहरबान अपने नूर से हम गरीबों की मदद फरमा मौला या मौलाए मेहरबान हमारे करीब आ जा मौला या मौला हमारे और करीब आ जा मौला अपना दस्त मुबारक हम गरीबों के कंधों पर रख मौला हमारे सरों पर अपना हाथ रख मौला कि तेरी रहमत के साये में मौला हम कुछ इल्मी काम कर सके तेरे फरामीन को पढ़ सके तेरे फरामीन को समझ सके मौला या मौलाए मेहरबान मदद फरमा Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. I give you my best special blessing for success, for enlightenment of your souls, for spiritual happiness, and for success in Bandagi. Ameen. If, inshallah, you are successful, keep that happiness for yourself. That is for each one of you individually. It is not to be shared. And if you try to share it, you will fail because people around you will not understand what you are talking about because you will have a sense of spiritual elevation. पिछले हफ्ते हम इस मकाम पर आकर ठहरे थे कि क्या वजह है कि जब हम रूहानी तरक्की करते हुए इस नूर से आशना होते हैं जब हमें इस नूर का तजर्बा होता है चूंकि नूर के तजर्बे अलग-अलग और बहुत किस्म के हैं नूर की तजल्लियात बहुत ज्यादा है इसीलिए अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये तजर्बा सबसे पहले अगर उन्होंने किया ही नहीं है कभी तो उसको समझ में नहीं आएगा और अगर किया भी है तो हो सकता है कि उनका तजर्बा अलहदा और आपका तजर्बा अलहदा हो and that's what we had stopped last week that if you try to share your spiritual experience first
if they have never experienced such a spiritual elevation, they will not understand. Second, if they have experience, then it is possible that your experience will be different than their experience. Because the manifestation of Nur, the way it would touch you, the way it will enlighten you, may be much, much different than what they have felt, seen, or experienced. So now we understand why Imam wants to keep that to ourselves. There is another reason for that, and that is, what is the purpose of sharing? Is the purpose of sharing so you can tell everyone you are successful, or to show off, or tell them how good you are in your ibadat? None of those reasons would benefit you. Matter of fact, there is a possibility, if and when you do share, you will lose that enlightenment, because the pride will come in your heart, and pride is never good for our success. Therefore, we should keep that to ourselves, as there is no reason for us to be sharing it. One, they will not understand, and two, we have no reason to share it. Inshallah, we understand that point, because you will have a sense of spiritual elevation, a sense of spiritual happiness, which you cannot find in a worldly context. इसकी कोई दुनियावी मिसाल नहीं है आपके पास कि जिससे आप उसको मिसाल देकर बता सके, समझा सके. And therefore, I say to my spiritual children, if you are successful, keep it to yourself. It will be immensely, I will be immensely happy, but keep this as an individual blessing for each and every one of you. When I said, so I said to my spiritual children, if you are successful, इसलिए मैं अपने रूहानी बच्चों को कहता हूँ, समझाता हूँ कि जब आप इसके अंदर कामयाब हो जाए तो मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा खुश होऊंगा. ये आपके और इमाम के दरमियान में है. आपकी खुशी में इमाम आपके साथ शामिल हो गए और आप इसको जाती रहमत के तौर पर अपने पास रखें. Now, sometimes Murid have said to me, why is Betul Khiyal at such a difficult time in the morning? This is a question that we also deal with. An Imam hear that from our leadership, and I'm sure that we ask our Mukhi Kamde Sahib or our ALWAAZ or our leadership, when we speak about timing of the Betul Khiyal early in the morning,
It is a difficult time, but remember, ibadat, bandagi, spiritual experience requires qurbani. Without the qurbani, one cannot and will not be successful in ibadat. Someone who has none whatsoever, a zeal for qurbani, one who's not used to giving oneself as an extraordinary qurbani will not be able to do it. But there are many ways one can get used to it, and we do that, and I can give you some example of that. If we have a flight to catch early in the morning, we do get up early in the morning on time, and we are very mindful while going to the airport to catch a flight. Or if we have early morning interview, we do get up early in the morning to shower and to look our best so we can go and be there on time, beat the traffic, and look our freshest. So we do those things. Just like that, what we do for our physical life, if we have decided, and there's a big if there, to give our qurbani to fulfill our promise. Because when we went to Bethel Kyal, remember, you went there on your own free will, and you made a promise to the Imam Zaman that I am ready to take my soul to the next level. I want to do something for my soul. I'm ready to give my time and my qurbani for the purpose of enlightenment. Remember, it was us who said that. And Imam have accepted your niyat. Now it is time for us to follow up with our action. Imam accepted our niyat, intention. Now it's time for us to follow up with action. यहाँ पर थोड़ा उर्दू में समझाता चलूं कि बैतुल ख्याल का वक्त इतना मुश्किल और सुबह को क्यों है। मौला फरमाते हैं कि मुझे ऐसा पता चला है कि आपका ये सवाल है कि क्यों इबादत का वक्त इतना मुश्किल वक्त में रखा गया है। तो उसके लिए नाचीज यहाँ पर तमीज के तौर पर आपको बताना या समझाना चाहता है कि इबादत कुर्बानी मांगता है। इबादत के अंदर अगर हमें रूहानी तरक्की करनी है तो उसके लिए कुर्बानी दरकार है। हम अस खुद अपनी खुशी अपनी मर्जी से इमाम के पास गए थे ये कहते हुए कि या मौला अब हम अपनी रूह के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपनी रूह की तरक्की के लिए। हमने एक वादा किया इमाम से और इमाम ने हमारी इस नीयत को कबूल किया और हमें इसमें आजम से नवाजा। हमने ये वादा किया था ये कहते हुए
कि अब हम तैयार हैं अपनी रूह के लिए कुछ करने के लिए, और रूह की तरक्की कुर्बानी मांगती है। नींद की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी। जो हमने वादा किया, अब वक्त आ गया कि हम उस वादे को निभाएं। आपने शायद ये सुना होगा, ये इंग्लिश के अंदर एक सेइंग है कि जो चोर होता है, चोर कहते हैं हमारा कामकाज, हमारे कामकाज करने की आदतें, पहले वो बर्डन के तौर पर हमें फील होती है, लेकिन आस्ते आस्ते ये बर्डन हैबिट में बदल जाता है, हैबिट में बदल जाता है। The chore becomes habit. When you practice, the practice which is burdensome, but eventually it becomes habit. And we have experienced that throughout our lifetime. If we are lazy, even that practice becomes habit. But if we are punctual, if we are punctual in doing things, that practice also becomes habit. You will notice those who are punctual, they are always on time because they have practiced that. This is their way of life. Now that have become their habit, is part of their habit now. So initial practice of ibadat may be burdensome, but if you practice, eventually that burdensome practice will become your habit, part of your life. Those who wake up early in the morning, eventually that becomes part of their habit. वो लोग जो सुस्त लोग हैं और सुस्ती की प्रैक्टिस करते हैं, आस्ते आस्ते वो उनकी आदत बन जाती है। वो हमेशा सुस्त होते हैं, हमेशा लेट होते हैं, कहीं पर भी वो पंक्चुअल नहीं होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर कोई शख्स पंक्चुअल होने की प्रैक्टिस करता है, जल्दी उठने की प्रैक्टिस करता है, इबादत की प्रैक्टिस करता है, आस्ते आस्ते वो भी उसकी हैबिट बन जाती है। फिर उसको पता भी नहीं चलता है, बस वो खुद ब खुद उसकी आंख सुबह को 3 बजे खुल जाती है। कितना भी थका हुआ होगा वो उठ जाएगा, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है। अब practice turns into habit. Remember that. I love this saying. It is an English saying. The practice becomes habit. I love this saying that whatever practice, good or bad, if you practice bad thing, that also becomes habit. But we're supposed to adopt good things in life. And if we adopt this practice, it will become easier because it will become your habit. So let's come back to the Farman. Now, sometimes Murid have said to me, why is Betul Khyal at such a difficult time in the morning? Mullah explains, and I have said to them, the Imam must guide you to the best possible success in Betul Khyal. That is so true. Imam always and always guides us on the Sirat al-Mustaqim, straight and short path, and toward the best practice. Best practice. He will not guide us on something which is not possible for us. It must be possible, and that must be the best for us to follow. So Imam guides us
toward the best possible practice so we are successful in ibadat. इमाम हमेशा हमें सीधे और आसान रास्तों की तरफ हिदायत करता है। जो सबसे बेहतरीन रास्ता है और तरीका है वो हमें समझाता है। और यही इमाम ने यहाँ पर भी किया कि नहीं, अगर आप चाहते हैं इबादत में कामयाब होना तो फिर उस वक्त उठें जो मैं तुमको कहता हूं, क्योंकि वही आसान, सबसे आसान और छोटा और सबसे बेहतरीन रास्ता है। नाचीज को वो फरमान याद आता है, इमाम आका मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जान से फिदा हो। उसके एक फरमान में मौला फरमाते हैं कि अगर कोई गाइड हो, अगर वो कहे कि इस रास्ते पे आपको टोपी नहीं पहननी है तो आप टोपी को उतार कर चलेंगे, क्योंकि गाइड को पता है कि वो रास्ता कैसा है। जस्ट लाइक दैट, when Imam says this is the best time, then he is the guide. He's been there, we haven't been there yet. He has seen this path, we have not. He knows the shortcut and the easiest path, we don't know that. As a guide, he guides, and if we wanted to be guided on the short and the straight path, the most easiest path, then we should follow his guidance. Mullah says, if I were to say to you midday, most of you would say sorry, can't do. अगर मौला हमको कहेंगे कि दोपहर को इबादत करोगे तो हम कहेंगे नहीं मौला, हमारा काम काज है, हम कैसे इबादत करेंगे? We will not be able to follow it. We will not be able to do it. But my aspiration is that each one of you should be successful. You see, because Mullah wants us to be successful. That is his wish and will. So what is he doing? He's giving us the best, easiest path. And we should follow without any question, because we trust him. Our tawakkal, our trust, we have put on him. He knows this path. He's been on this path. He knows how to be successful on this journey. So we should follow it. Mullah says, but my aspiration is that each one of you should be successful. Inshallah, Ameen. In order to be successful, you want to have a peace around you. You want to have calm and quietness around you. अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, इस मामले में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर मौला फरमाते हैं कि जरूरी है कि आप उस वक्त इबादत करें कि जब आपके करीब करीब खामोशी और अमन का माहौल हो, अमन का माहौल हो. It must be that that time around you is a time of peace, quietness, and calm. And I do not want to be disturbed by worldly matters. क्योंकि दिन के वक्त अगर हम ये काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, शोर होगा, अमन नहीं होगा, चेल पेल होगी. So this is the best time when we could practice in peace, in calm, inshallah. Mullah further says, inshallah, at least once in your life, each one of you will be reached by this light. You will be touched by this light,
and it will bring you immense strength, immense strength. It will bring you courage to face worldly difficulties. I will explain this line. What does it mean, worldly difficulties? It will bring you spiritual happiness. So I give my special blessing for success. खानावदान खानावदान खानावदान। मौला फरमाते हैं इंशाल्लाह आप सब अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा, इंशाल्लाह एक से भी ज्यादा, लेकिन कम से कम एक मर्तबा इस नूर को महसूस करेंगे। ये नूर आपको छुएगा, आपको इस नूर का तजर्बा होगा कम से कम एक मर्तबा, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत आएंगी और आप दुनिया की डिफिकल्टीज को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। क्या मतलब है दुनिया की डिफिकल्टीज? आप अभी जो कहते हैं ना कि मैं बहुत थक जाता हूं, मैं बहुत थक जाती हूं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, या आप जब कहते हैं मैं बहुत काम करता हूं, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं तो मैं थक जाता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं, मौला फरमाते हैं आप इबादत में आए, वहां से आपको हिम्मत मिलेंगी, ताकत मिलेंगी, आपको तमाम जो दुनिया की डिफिकल्टीज है उसका सामना करने के लिए एक रूहानी ताकत मिलेंगी। फिर आपको कोई मसला नहीं होगा कि आप कितना मुश्किल काम करते हैं फिर भी आराम से सुबह को उठेंगे। Let me explain this in English now. Imam says that this light will give you strength, will give you courage, will give you the happiness. If you come to the ibadat, and we understand we have small children and woman has to do a lot of work, working and taking care of children. Parents have to do a lot of work, working outside, working inside, and taking care of the family. Man or female, both have a lot of difficulties. That is understandable. But at the same time, if you fulfill your promise and do this ibadat will give you so much strength and courage that those difficulties will not feel hard anymore. It will not feel hard anymore. Now, the same difficulties will start to look easy because you will have that strength, the courage that comes from the ibadat, from the nur, from the happiness, from the touch of the light. Don't believe me, try it yourself. आपको मेरी बात के पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ट्राई करके देख लें। आपने इमाम के अल्फाजों को देखा, अगर इमाम के अल्फाजों पर यकीन है तो आप खुद ही कोशिश करके हिम्मत करके देख लें, फिर आप खुद ही ये बात कहेंगे कि वाकईअन जो बात आपने कही थी वो दुरुस्त है। और किस तरह से इबादत के अंदर से आपको हिम्मत आती है, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आस्ते आस्ते जो मुश्किल काम थे वो खुद ब खुद आसान होने लगेंगे। एक नहीं, सैकड़ों लोगों से ये बात हमने सुनी कि पहले वो काम जो मुझे दुनिया में बहुत मुश्किल लगते थे, चूंकि अब इबादत में हम रेगुलर हो गए हैं, वही काम हमारे लिए आसान हो गए हैं। किस तरह से आसान हो गए? काम आसान नहीं हुए, आपके अंदर हिम्मत आ गई उन कामों को
आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए, इंशाल्लाह. It is not that the work came easier, but because you have spiritual strength, inner courage, mind over body, the soul is powerful now. So you had that courage and strength to face, inshallah. Sit in peace. Don't worry about the world. Sit in peace and concentrate on ball. And inshallah, at least once in your lifetimes, you will be successful. Khanavadan, Khanavadan, Khanavadan. Just don't worry about world. That work will go on, and remember, one day we all have to leave everything that we run after, everything that we are collecting physically. We will have to leave all of that here. Seek your spiritual enlightenment, elevation, happiness, because that is the one part which will go with you. दुनिया की फिक्र छोड़कर आप आराम से इबादत में बैठे, क्योंकि याद रखें कि जो भी दुनिया में आप कमाएंगे, जो भी दुनिया में समेटेंगे, वो सब का सब 4 दिन के बाद इधर ही रह जाने वाला है. अक्लमंदी का ये तकाजा है, हिकमत का ये तकाजा है कि हम वो चीज को समेटें जो हमारे साथ चलने वाली है, और वो हमारी रूह और रूह की तरक्की, हमारी रूह और हमारी इबादत, हमारी रूह और हमारे अच्छे आमाल, वो हमारे साथ चलने वाले हैं. अक्लमंदी इसमें है कि हम उसको समेटें, ना कि जो पीछे छोड़कर जाना है. I did say it, but I repeat it. If you are successful, keep it to yourself. That is your individual blessing. That is your individual happiness. And this is not a worldly matter. It is a spiritual matter. मौला दोबारा से हमें समझाते हैं कि जब आप इसमें कामयाब हो जाएं, आप उसको अपने पास रखना, क्योंकि ये जाती है, आपके और आपके इमाम के दरमियान में है, और ये कोई दुनियावी मामला नहीं है कि आप उसका तस्करा करेंगे और दूसरों के साथ उसको बांटेंगे. There is no point trying to discuss it with others or explain how you felt when you have been touched by the light. There is no point doing that. It's not a worldly matter that I'm so successful. Let me show you my new car, my new home, my new suit, my new tie, my new dress. It's not a worldly matter. This is so personal and individual, unique to you. It's a matter of soul and spirit. Individually between the Imam and the Murid is not something that you should share or could share. ये कोई दुनियावी चीज नहीं है कि मेरी नई गाड़ी आकर देखो, मेरा नया घर देखो, मेरे ये सूट और टाई, मेरे ये ड्रेसेस को देखें, आप मेरी साड़ी को देखें. ये ऐसी चीज नहीं है. ये बहुत ही जाती और प्राइवेटली आपके और आपके इमाम के दरमियान में है.
आप इसको अपने पास रखें ताकि आप उसके अंदर रोज ब रोज इजाफा करें. Let me give you example of that. How personal this thing is. You know how personal is your secrets, your bank account, your jewelry. Where do you keep all of those things? In hiding, in secret. You don't share your bank account with others. You don't share your secret places with others. Just like that, this is a bank account, a spiritual bank account. This is your spiritual income. This is your spiritual jewelry. This is your spiritual secrets. Just like we don't share our secrets with others, don't share this with others. It is yours to keep, yours to know, yours to experience, and yours to enjoy. Inshallah, each one of us will be touched by this light. There is no point doing that. Keep it as an individual gift. Keep it with you. Keep it in happiness. Keep it in joy and give you special blessing for success. And I give you special blessing for success. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. चूंकि ये आपके लिए जाती है, आप उसको अपने पास रखें और किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है. आखिर में मौला दोबारा से दुआ आशीष फरमाते हैं. I give you special blessing for success. आमीन. खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान. यहाँ पर ये फरमान तमाम होता है. इंशाल्लाह next time, next week, we will start with our number 52. Ahmedabad, India, बैतुल ख्याल मुलाकात February 23rd, 2018 से इसका आगाज करेंगे. बहुत नवाजिश. Thank you for joining us. Let me go back to the page. So if you are looking for the date of this Farman we read today, it was from Dubai, January 23rd, 2018, Baitul Kiyal Farman. Ji. Shukr, alhamdulillah. Thank you very much, sir. Subhanallah. It was a very beautiful Farman and we finished it today. So it was very nice. Shukr. Friends, if you have any questions, please, you can put it in the chat box or you can raise your hand. Sir, while friends are thinking, I just want to say something. Sir, you explained it very well how personal this is, you know, the experience. Just as also Peer have explained us that karine dekho ji, because unless we won't do it, we won't understand it. So I like the way you explained it, that it is so personal to each and everyone. Yes. Sir, also when you were talking, yes, sir. And to add to that, you know, I can say whatever and you can listen to whatever, but until you yourself try it, the strength that we speak of, the Mullah speaks of, you will never know that strength and that courage that comes with ibadat until you yourself try it. And I would encourage everyone and see how your chore, burden, practice becomes your habit. Try it for 40 days. It will become your habit. It will become like your second nature. Try it. Try it for yourself. Don't take my word for it. Try it for yourself. See how the practice becomes your habit. Ji, go ahead, Fir. Shukr, alhamdulillah, sir. Thank you for that encouragement. Yes, we all need that, push sometimes. So thank you.
Sir, I also heard one of the word in the beginning of the Farman, the tajalliyat. That Noor has many tajalliyat. So tajalliyat is manifestation, correct, sir? So, Right. sir, Imam is Allah's manifestation. So, sir, can you elaborate some more tawilat behind this word manifestation, please? G. The word that Nachis used was Tajaliyat. Allah's Noor has many ways to touch. As this Garib and Nachis was explaining last week at the beginning of this Farman, how how this Noor can touch you, you can see it, you can hear it, you can smell it, you can taste it, it will touch you. Just like that, the didar of this Noor, even with the eyes, can come in many different ways. I remember answering to one of the questions from the friend on this line when she asked, would we see this didar in the shape and form, meaning seeing the Imam Zaman? I said yes, but, and what was that but? It can be in any other tajalli manifestation of the Imam, because Imam has many manifestations. We know those 49 manifestations. What about 124,000 prophets and the Nur in them and their manifestation? Manifestation can be many. So Nurani experience can be many. Now let's talk about the light itself, just the light. No phase, but the light. It can be as a spark. It can be just like a light bulb or like a moon or sun. It can be lower, higher, dim, brighter. Walking. How about Nur walking and talking? Can you ever imagine the Nur walking and talking? How amazing that experience would be. We could sit over here and we can talk about it, but one will not be able to understand until you yourself practice and experience that Nur. Because Nur has many, many, many tajaliyat manifestations. And when it comes to you, you will be so amazed. That's why Imam says, even if you explain to somebody, they will not be able to understand because they don't have that experience. That experience is unique to you. How will you explain to somebody that Noor was walking and talking? Do you see? That is a great example why Imam tells you not to share that. G. Yes, sir. Subhanallah. Thank you very much for explaining that. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Friends, if you have any questions, please come forward or you can raise your hand. Sir, I don't see any question in the chat box. If any friends wants to say something, you can come forward, you can unmute. Sir, we have Gulzar here. Please unmute yourself, Gulzar. Gulzar, please याली unmute. मदद याली मदद Yali सर Madad. Yali Madad. सर दो चीज पूछनी थी। एक तो ये कि सर जैसे है ना इलम के लिए है ना अगर उठ जाना है या इलम के लिए कितना भी करना है ना तो वो
ऐसा शौक से हो जाता सर, लेकिन इबादत के लिए करने की मतलब कोशिश करते ना, तो बहुत ऐसा वो लेजीनेस होती। तो ये क्या मतलब हुआ सर, और कैसा इबादत इसमें आजम की स्पेशली इबादत के लिए हम अपने अंदर कौन सी तस्बीह पढ़ के ताकत और लाए कि हम बराबर रेगुलर कर सके टाइमली? जी, इबादत के लिए सबसे पहले इश्क। जब हम इमाम के पास जाते हैं बोल लेने के लिए, तो जो इश्क से हम वहां पर गए थे, जो हिम्मत करके हम गए थे, उसकी जरूरत पड़ती है। अगर हम उसको याद करें कि जब इमाम तशरीफ फरमा थे और जिस शौक से हम गए थे, जिल कहते हैं इसको, जिस शौक से हम गए थे और जिस इश्क से हम गए थे, उस शौक और इश्क से हम इबादत के लिए जाएं। इसका कोई इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितना मजा है इबादत के अंदर। जिस तरह से इल्म का जो मजा है वो एक यगाना है, अलहदा मजा है। इल्म पढ़ना और इल्म लेना, इल्म को सुनना बहुत मजा आता है, लेकिन इबादत का खुद का इतना मजा है, क्योंकि इबादत के अंदर जो हमें सुकून मिलता है, इबादत के अंदर जो खुशी मिलती है, वो तजर्बा ऐसा अजीब और गरीब है कि जिसका बयान नहीं हो सकता है। अगर ये बात हम ध्यान में रखें ना कि इबादत में क्या खुशी मिलने वाली है, उसका सोचे अगर हम, और जिस तरह से हम खुशी खुशी और मोहब्बत से हम इमाम के पास गए थे, उसको याद करें, तो फिर इबादत में बड़ा मजा आता है और इबादत में उठने में जरा भी दिक्कत नहीं होती है। आपकी बात सही है, क्योंकि इल्म के अंदर टू वे कन्वर्सेशन है ना, एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी सुन रहा है। इसी तरह से आप याद रखें कि इमाम आपके पास खड़े हुए हैं। मेक दैट अ टू वे कन्वर्सेशन। शुरू शुरू में आप इस तरह करें कि आपको याद रखना है कि इमाम आपके साथ आपका हाथ पकड़कर आपके कंधे पर अपना दस्ते मुबारक रखकर खड़े हुए हैं आपके पास। फिर आपको मजा आएगा। एक मर्तबा आपने वो मजा चख लिया, फिर आप नहीं छोड़ने वाले इबादत को। फिर आप 1 घंटा नहीं, आप 2 घंटा इबादत करेंगे। और कभी कभार हो सकता है आप रात को 2 बजे उठ जाएंगे, 1 बजे उठ जाएंगे, 12 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि वो मजा आपके दिल के ऊपर लग चुका है। अब इस तरह से आप शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप अपने उस एक्सपीरियंस को याद करें जब आप इमाम के पास गए थे इसमें आजम लेने के लिए, शुरू शुरू में। बाद में आस्ते आस्ते आपकी आदत हो जाएंगी, और एक मरतबा वो मजा लग गया दिल में, फिर आप कभी भी इबादत को नहीं छोड़ेंगे, कितने भी थके हुए होंगे। बल्कि इबादत के अंदर आपकी थकन उतर जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगे। जिस तरह नाचीज ने अर्ज की कि फिर आप 4 बजे नहीं, 3 बजे भी नहीं, शायद 2 बजे उठने लग जाएंगे, क्योंकि इतना मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। जी। थैंक यू सर। सर, और एक फरमान है कि अगर तुम अपने रूह के लिए कुछ करे तो क्या करे, तुमको दूसरों के रूह के लिए जब तुम करते हो ना, तो इबादत से भी ज्यादा सवाब है। वो एक्सप्लेन करो ना सर प्लीज। जी। जी, नाचीज ने एक जब हम कलाम इमाम मुबीन पढ़ रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कराची ग्रुप था या इंडिया का ग्रुप था, तो वहां पर नाचीज ने एक बात समझाई थी कि देखें, एक फैमिली है, पहले वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करता है, पैसे कमाता है, अच्छा घर लेता है, अपनी फैमिली को आराम देता है। इसके बाद क्या करता है?
वो अपने भाइयों बहनों की मदद करता है, अपनी जमात की मदद करता है, दूसरे लोगों की मदद करता है। इसी तरह से इबादत के भी पहले पहले अपनी रूह के लिए होती है। कितनी जाती है ना। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप इबादत करते हैं और ये कहते हैं, सुने गौर से सुनना, आप ये कहते हैं, या मौला मेरी इबादत का जो भी सवाब है ना, वो जो हाजिर जमात यहाँ पर बैठी हुई है, जमात खाने में है, इस वक्त इबादत के लिए जो लोग हाजिर हुए हैं, मेरी इबादत का सवाब तो उनको दे दे, मेरी इबादत का सवाब तो उसको दे दे। अब सोचे इमाम आपसे कितने खुश हो गए कि आप कहते हैं कि मेरी इबादत का सवाब उसको देते हैं। अब कोई सोच रहा है इस लाइन पर अभी अभी कि क्या ये मुमकिन है? बेशक मुमकिन है, अगर आप उस दर्जे पे पहुंचे हैं तो। मैं आपको याद दिलाऊं, पीरों ने इबादत करके करोड़ों को तारा था, पीरों ने इबादत करके करोड़ों को तारा था। मौला ने आपको भी दाई बनाया है। आप एक को तो तार सकते हैं, दो को तो तार सकते हैं। भाई आप भी कोई लल्लू पंजू तो नहीं है, आप मौला के रूहानी बच्चे हैं। आप अपने आप को कम नहीं समझना, आप इमाम के रूहानी बच्चे हैं। आप एक दो को तो तार सकते हैं आराम से। आप कोशिश करें, पहले अपने लिए अपनी रूह को मजबूत करें, फिर उनके लिए दुआ करें। तो मौला ने क्या फरमाया, उसमें आपको अपनी खुद की इबादत से भी ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर, शुक्र अली अल्लाह सर, थैंक यू इंशाल्लाह सर। मेरे उस्ताद फरमाते थे, एक मर्तबा हमने आपकी तरह ही हमने अपने उस्ताद को कहा कि साहिब आप तो इतनी इबादत करके इतने आला दर्जे पर पहुंच गए, हम गरीबों का क्या होगा? हम बच्चे थे ना, हमें लगता था कि हम तो कभी भी उधर नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर हमारा उस्ताद है। वो हमारी आजीजी भी थी और वो हमारी नेक नियति भी थी, और हमारे उस्ताद बहुत ही आला शख्सियत थे। पता क्या फरमाते मेरे उस्ताद, ले लो, जाओ, तमाम रूहानियत तुम्हारी हुई, जो भी तुम समझते हो मेरे बारे में वो सब तुम्हारा हुआ, जाओ ले लो। फिर हाथ उठाया, या मौला मैं जबानी जबानी नहीं बोल रहा हूं, मैं नियत करता हूं, जो भी तूने मुझे दिया है ना, वो मेरे शागिर्दों को दे दे, सब कुछ दे दे, मुझे गरीब फकीर बना दे। देखा आपने, ये है रूहानियत के अंदर ताकत की जो मौला ने बात की ना, कि आपको इबादत में ताकत आएगी, अजीब और गरीब जज्बा होगा आपके अंदर, आप कुर्बान 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 हो गए जमात के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा। ये है इबादत का मजा, और इबादत के अंदर जो हिम्मत आती है वो ये है, आप कंजूस नहीं, आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा। क्या फरमाया उस्ताद ने, जाओ ले लो सब कुछ, या मौला मुझे गरीब और फकीर बना दे और सब का सब इनको दे दे इंशाल्लाह। ये है ताकत इबादत के अंदर। आमीन, जी शुक्र अली अल्लाह, थैंक यू सर। In English, please, Aziz Bhai. यस। So my sister was asking, there is a Farman of Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to that Imam, said, it is better to do for others than do it for yourself. Just like that, ibadat initially is done for ourselves, but then there comes a stage, and the example
this Garib had used how our peers have not only elevated themselves, but have given salvation to millions and millions upon millions. If they can give salvation to the millions, then we are also Imam's spiritual children. Don't underestimate yourself. You are Imam's spiritual children. You can at least give salvation to yourself and one other soul, maybe two other souls. Initially, ibadat is individual and personal. You must bring that elevation to yourself first. When you are there, you will have so much courage and strength in your soul that you will be able to give your ibadat, the sawab of your ibadat. You will be able to lift one or two, maybe even more, above the level. If when you are sitting in ibadat, in Jamaat Khana, and if you are at that such level, and you know which level I'm speaking of, your prayer would be, Ya Mullah, take the ibadat and give to all my Jamaati member present here today. The sawab or this ibadat, give to them, Mullah Baba, because you will become generous. Your heart will become this big. You will no more be selfish or stingy, because that is the strength and the courage that comes with the ibadat. So I was giving her the example of my teacher. One day, we told our teacher, Sahib, you are so far ahead, and look at us, we are so poor. How will we ever get there? We are worried. How will we ever get there? You know what he replied? That whatever you think of me, if you think I have a lot of ibadat, take it. If you think I have a lot of ilm, take it. If you think I have some ranks and elevation, take it. It is yours. Then he raised his hand toward Mullah Baba. Said, Mullah Baba, I'm not just saying this with a word. Ya Mullah, whatever you have given to me, give to my students. Let them have everything I have. Make me empty and garib and fakir. Give them everything. Let them have everything. Elevate their soul. Elevate their ranks. Give them the highest. Give them the best. Whatever they think I have, let them have it. Why? Who would do that? If you go to somebody in this world, even if they are generous, they will give you $1 or $2, 100 or 2, 1,000 or 2. But they will not give them entire bank balance to you. But in ibadat, that courage that Imam talks about, the strength that Imam talks about, your heart will become this big. You wanted to just give to everybody. And that makes Imam so happy. And Imam says in that Farman she was speaking, khidmat of other, meaning helping other, not voluntarily khidmat, that also is in this place. Helping others has a bigger reward than helping yourself. Ji, बहुत nice, बहुत खूब. Ji. Shukr, alhamdulillah. Thank you, sir, for explaining that in English too. Ghulam Haider, sir, you can, Ghulam Haider, you can unmute yourself.
सर गाली मदद। याली मदद। सर मैं आज पक्के खोजे पाए वाली बात करूंगा। बेशक। सर वो जो आपने इस वक्त सवाल पूछा था ना, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो अभी आप भी दे दो सबके सबको, मेरी वजह से 115 लोगों का फायदा हो जावे आज। क्या चीज है वो? जो आपने बचपन में सवाल पूछा था ना, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 115,000 ने अभी तक सर 114 जा रहे थे, अभी 116 हो गए, देखो कितने का भला होगा। ये गरीब और नाचीज किसी को क्या दे सकता है, लेकिन मेरा मौला बहुत मेहरबान है। मेरा मौला इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो 116 क्या 11 मिलियन को भी तार उतार सकता है, और वो जरूर और जरूर और जरूर रहमान और रहीम है। हम हाथ उठा आमीन के दुआ करते हैं कि या मुल्ला आमीन आमीन तू सबकी रूहानी तरक्की करना, आमीन हम आमीन गरीबों की भी करना और सबकी भी करना। आमीन आमीन या आमीन मौला आमीन तेरी रहमत पर हमको तवक्कल है, भरोसा है, और आमीन तू ही हमें वो रास्ता और उस मकाम पर पहुंचा सकता है। तू ही आमीन हमें सलामती के घर में दाखिल कर सकता है। या आमीन मौला आमीन मेहरबान, हम गरीबों पर रहम करना और हर आमीन हमेशा अपने नूर से हमारी हिदायत फरमाना। हर आमीन हमेशा अपना मुबारक हाथ, शफकत, मोहब्बत हमारे सरों पर रखना मौला। या आमीन मौला आमीन मेहरबान, हमें इबादत में इतनी तरक्की दे, जमात तो क्या, हम पूरी उम्मा को तार जाएं। आमीन आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन या रब्बल आमीन आलमीन। आमीन। सर, तो ये एक जो 116 लोगों को मैंने दुआ दिलवाई, इसका भी मुझे एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा ना 116 मरतबा फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। सर? थैंक यू याली मदद सर। याली मदद। हमारे वो साथी जो ह्यूस्टन में है, आज इंशाल्लाह पर्सनल जाती कुछ सेशन हो गए ह्यूस्टन के अंदर। जो भी साथी आना चाहे वो फेरिल से राब्ता कायम करें। आज हम यहाँ पर पर्सनल क्लासेस करने वाले हैं ह्यूस्टन के अंदर। जी। याली मदद सर। याली मदद। सर आपने अभी इतना समझाया, जब तक लाइट नहीं मिलती है उस वक्त तक कितना पेशेंस रखना होगा सर। जी, कितनी हिम्मत चाहिएगी। हिम्मत इमाम की तरफ से आती है। आप सिर्फ दुआ करें, हाथ उठाएं और दुआ करें, देखें मौला कितना हिम्मत देने वाला है। अजीब और गरीब है मेरा मौला, वो इतना हिम्मत देता है कि आपको यकीन नहीं आएगा, इतनी हिम्मत देगा आपको। आप बस उस पर तवक्कल करें। सूरह फुरकान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा पता है क्या फरमाता है कि जो अल हई है ना, जो हाजिर और मौजूद इमाम है, तो अपना तवक्कल, अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट उस पर रख, हमेशा उस पर रखना। तो यहाँ पर नाचीज भी आपको यही कहता है, आप इमाम पर भरोसा करें, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। वो बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तो सर जी। इसीलिए गिनान में बोला है कि तेने जानीने तमे ओळखो, सेवो यही दयाल हरनता फरनता ने बोलनता। जी। तो ओळखना यानी ये जुबान है, जब तक पहचान नहीं होती उस तक हिम्मत रखनी है। पहचान नहीं है ना, जी। तवक्कल पहचान। हाँ, आमीन आमीन, जरूर मौला, जरूर हम इमाम के साथ आज उसकी जन्नत में, उसके साए में, उसके नूर के साए में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है। और सर आप जी। दुआ करो कि हमारा ईमान सलामत रहे सर, ईमान मौला सलामत। हमारा आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। आमीन। Amin, sir. Thank you very much. So, thank you for giving us so much time of your and the knowledge you are sharing with us. We appreciate it so much, sir. And you are शुक्र मौला। also welcome to different cities. Someone is also calling you to Calgary. So, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Last year we went to Montreal and Toronto and Edmonton, but inshallah we will take more tours every year.
and we will come to your city personally, inshallah. Thank you for inviting. Thank you so much. Friends, if you have any questions, please unmute your device. Sir, I don't see any questions in the chat box, and I don't see any hand raise. We can stop here if you wish. Okay, friends, then if you don't have any questions, sir will take leave. Okay, Thank you, thank you very much, everyone. sir. Thank you, Thank you for friends, for joining. joining. Thank you, Farrell, Thank you, for sir. such a great job. Thank Thank you, you, thank Yali you, sir. Madad. Thank you. Shukran. Yali Madad, sir. Thank you, Yali sir. Thank you Madad. very much, Yali sir. Madad. Yali Yali Madad. يعني مداد Madad, يعلم sir. مدى شكرا Yali Yali شكرا Madad. مدى sir Yali Madad. Yali يعني Madad. مداد sir. Yali Madad. Yali Madad.